Hi you guys, welcome to a brand new video. Today I'm going to create Alia Bhatt'S Met Gala look. So let's get started. Her skin looks really hydrated, so I'm going to start off with a moisturizer and I'm using Pond's Super Light Gel. Now I'm using e.l.f. Power Grip Primer. For that extra glow, I'm using MAC Strobe Cream. I'm going to apply it on my high points. For my eyebrows, I'm using e.l.f. Brow Lift. For foundation, I'm using LAKME 925 Perfect Matte Cover Foundation in the shade Warm Beige. तो मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ कंसीलर एंड कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ एलेगल का प्रो कंसील इन द शेड मीडियम बेज. और के लिए मैं यूज करूंगी हुडा ब्यूटी का टैंटोर इन द शेड मीडियम. इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी चीक बोन पे. और ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ हेना ब्यूटी का लिक्विड ब्लश इन द शेड मेलो और इसको मैं कॉन्टोर के ठीक ऊपर प्लेस करूंगी. अंडर आइज को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ NYX बेयर विद मी कंसीलर इन द शेड गोल्डन. To set my under eyes, I'm using MERCIER translucent powder. For my eyes, I'm using TANNBEAUTY This Is All I Need eyeshadow palette. सबसे पहले मैं यूज करूंगी शेड कोल. Now I'm using shade Workaholic. For my inner corner highlight, I'm using this shade Bonfire. For mascara, I'm using Maybelline Sky High Mascara. For bronzer, I'm using Benefit HOOLA bronzer.
For my blush, I'm using Maybelline Fit Me blush in the shade Wine. For highlighter, I'm using Fenty Beauty highlighter in the shade Sand Castle. My lips, I'm using L'Oreal liquid lipstick in the shade I Explore. I hope you guys enjoyed it. If you liked it, please drop a like and a subscribe. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Okay, bye.